وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum Inshallah, we will begin from verse number 66 of Surah Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. And says man, what when I shall die, will I soon be brought out alive? Does not remember man, anna khalaqnahu min qabl, that we created him from before, walam yaku shay'a, while not he was anything. فَوَرَبِّكَ, then by your Lord surely we shall gather them and the devils, summa lanuhzirannahum, then surely we shall present them around the hell, jisiya, on their knees. Summa lananziyanna min kulli shia, then surely we shall drag out from every sect or every group, ayyuhum ashaddu, which of them had been the severest against the most gracious, itiya, in rebellion. Then surely we know best those who are most worthy in it to be burnt. Siliya means to be burnt. और पूछता है इंसान, क्या जब मैं मर जाऊंगा जरूर क्या मैं फिर निकाला जाऊंगा जिंदा करके? क्या नहीं है याद इंसान को क्या हमने पैदा किया उसको इससे पहले जबकि वो कुछ भी नहीं था? फिर तेरे रब की कसम, जरूर हम इकट्ठा करेंगे उनको और शयातीन को, फिर हम हाजिर कर देंगे उनको जहन्नम के इर्द गिर्द अपने घुटनों के बल, उनके घुटनों के बल। फिर हम खींच कर निकालेंगे हर ग्रोह में से उनमें से कौन सबसे ज्यादा सख्त तरीन था रहमान के मुकाबले में सरकशी में। फिर जरूर हम खूब जानते हैं कौन है जो सबसे ज्यादा लायक उसमें जलने के लिए। इन हदीस कुदसी मीन्स अल्लाह की बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, इसको बोलते हैं हदीस कुदसी, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह इन द टंग ऑफ द बिलोवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन हदीस कुदसी Allah subhanahu wa ta'ala says, man denies and man makes mockery. Denies in the sense that he refuses to accept the day of resurrection. He refuses to accept that he will be resurrected again. He denies the fact that he will stand accountable before Allah. This is takzeeb. यानी इंसान झुटलाता है कि वो दोबारा नहीं पैदा किया जाएगा और इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसको अल्लाह के सामने खड़ के हिसाब देना होगा। दूसरी चीज अल्लाह फरमाता है, बनी आदम में से कुछ लोग मेरे को एजा पहुंचाते हैं, दे हर्ट मी, यानी कि जो है वो अपने जबान से ऐसे बातें कहते हैं और मेरी तरफ मंसूब करते हैं जो उनके लिए लायक नहीं, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। तो यह मेरे को एजा पहुंचाते हैं। तो दे हर्ट मी, वन इज तकजीब एंड अनदर इज एजा, वन इज डिनायल एंड अनदर इज टू हर्ट। एंड अल्लाह सेज द सन ऑफ आदम हर्ट्स मी, एंड अल्लाह सेज दैट he utters blasphemous statements against me, associates partners with me, and attributes those partners to me. This is hurting me. So man denies and man hurts. This is what Allah says in the Hadith Qudsi. So यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि इंसान पूछता है, what when I'm going to be dead, will I be brought out alive? Allah says you were lifeless at one point of time, you were dead as it is, you were brought to life. Who gave you life and brought you into this world? So that Allah subhanahu wa ta'ala who could give you life for the first time, is it not possible for him to give you a life again? This is simple logic.
If you use your brains even to the slightest extent, you will be able to understand this point very clearly. Well, you're bent upon rejecting, that's a different matter. लेकिन अगर थोड़ा भी तुम्हारी अक्ल इस्तेमाल करेंगे, वो अल्लाह और वो ज़ात जो तुम्हें पहली बार पैदा किया, जब तुम जो है तुम्हारा वजूद ही नहीं था, तुम काबिल जिक्र नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वजूद में लाया दुनिया में, वो ज़ात जो तुम्हें पहली बार पैदा किया जब तुम काबिल जिक्र भी नहीं थे, तुम थे ही नहीं, तो फिर क्या अल्लाह को मुश्किल है कि दोबारा तुम्हें मौत के बाद जिंदगी बख्शे। तो जो लोग जो है क़यामत को इनकार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला says they will be burnt in the hellfire, and Allah knows best who's to be thrown into the hellfire. Particularly those people who are bent upon rejecting Allah, who have been rebellious, who have been disobedient, and who have grossly violated the commandments of Allah left, right, and center, will be the most worthy to be burnt in the hellfire. May Allah protect all of us. Ameen. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. And there is none among you but will pass over it. وَارِدُهَا, but will pass over it. Is upon your Lord a decree to be accomplished. Then we shall save those who feared, and we shall leave the wrongdoers in it on their knees. और नहीं है तुम में से कोई भी मगर उस पर गुजरेंगे या उस पर पार करेंगे। यह है आपके रब का एक तयशुदा फैसला जो पूरा होकर रहना है। फिर हम बचा लेंगे उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किए, और हम छोड़ देंगे जालिमों को उसमें घुटने के बल। Now what is that which Allah says they will pass over it? This is only called Pul Sirat. That's a bridge over the hell, ultimately leading to paradise. And every single human being, right from Adam alayhi salam to the last soul born in this world, will be made to pass over it. आदम अलैहिस्सलाम से लेते हुए वो आखिरी इंसान क़यामत से पहले जो पैदा होगा, हर एक को उस पुल सिरात से पार होना होगा. And this is to be a bridge where every person will be made to pass. Yes, those people who are God conscious, those people who were righteous, those people who remembered Allah, those people who prepared for the hereafter, those people who were humble and sincere in their worship to Allah, not associated partners with Allah, followed the teachings of Allah and His Messenger to the core, were fearful of the day of Qiyamah. Well, these such type of God-fearing people will just pass away according to the hadith in various forms, based on their taqwa and their strong iman. Prophet ﷺ has said, some will pass over it like how long it will take just to blink an eye. आंख झपकने पर कितना जो है आसानी के साथ आंख झपक सकते हैं, इतना आसानी के साथ वो पुल से पार होकर जन्नत में चले जाएंगे. There will be some who will pass over it like a fast moving wind. तेज हवा की तरह जो है they will just pass over. Some will pass over like a bird flying, and some will pass over like as though he is traveling on a fast running horse, and some who will pass over it while walking in the normal state. तो मुख्तलिफ तरीके से जो है लोग उससे गुजरेंगे. खास तौर पर जो परहेजगार हैं, जो नेकोकार हैं, जो अल्लाह से डरने वाले थे, डर कर जिंदगी गुजार रहे थे, जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारते थे, जो क़यामत के लिए तैयारी करते थे, क़यामत की फिक्र थी और क़यामत के जो है उस हौलनाकी के बारे में जो है वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर पनाह चाहते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पलक झपकने के देर से भी जो है उनको उस पुल सिरात से पार कर देगा. कुछ को जो है बिजली और तेज हवा की तरह जो है उनको पार कर देगा. कुछ को जो है एक परिंदा जो है जो उड़कर जाता है उस तरह जो है उनको पार कर देगा, या तेज घोड़े पर सवार होने वाला एक सवारी कैसे पार होता है उस तरीके से पार हो जाएंगे. कुछ जो है चलते 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 पार हो जाएंगे और जन्नत में जाके पहुंच जाएंगे. But what about the wrongdoers? وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا. But those people who committed shirk, those people who denied the Yawm al-Qiyamah, those people who didn't care about what the Akhirat is all about, these people will not be able to pass over it and they will fall into the hellfire. ये लोग जो है जन्नत में नहीं जाके पहुंचेंगे सलामती के साथ, और फुट पर जाते ही जो है वो गिरकर जो है जहन्नम के नीचे जहन्नम में जाकर गिर पड़ेंगे. So this is the bridge over the hell, ultimately leading to paradise. Only God-fearing people will pass and enter into the paradise peacefully and securely, while as the evildoers will not be able to pass over it, and while they will be on the bridge, they will immediately fall into the fire straight away down below. This is according to the authentic hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. And when is recited upon them our verses, clear, said those who disbelieved to those who believed, Ayyul Fariqain, which of the two groups are better in position and have better assemblies? And how many we destroyed before them of the generations? They were better in their positions and outward appearance. और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी आयतें वाज़ेह, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उन लोगों से जो ईमान ले आए, इन दो ग्रोह में से कौन ज्यादा बेहतर है मकाम में और किसके मजलिसें ज्यादा शानदार हैं, और कितने हमने हिलाक किया उनसे पहले कौमों को जो ज्यादा थे साजो सामान में और नाम और नमूद में. So the rich people used to make fun of the Sahabas. Ammar bin Yasir radiallahu ta'ala anhu, Suhaib Romi radiallahu ta'ala anhu, Bilal radiallahu ta'ala anhu, and many such like type of poor Sahabas were there. So the rich, Utba, Sheba, Abu Jahl, Abu Lahab, As bin Well, all these people used to make fun of them and said, see our programs, see our gatherings, see our economic condition. Look at yourself. You are following a religion which has not given you anything. You are poor people, have no social status. Your gatherings are so dull. They don't have any vibrancy in it at all. Look at us. Allah subhanahu wa ta'ala says, these fools do not, they know that there were communities and generations much more wealthier, much more skilled, much more prosperous than what these are. Did Allah spare them? When they rejected their respective prophets, what did Allah do? He destroyed them. Be it the people of Hud, that is the community of Ad, be it the people of Samud, be it the community of, be it the people of Salih al-Islam, the community of Samud, be it the people of Lut, be it Pharaoh. All these people were destroyed. Don't these people know what did their lifestyle do to help them? Nothing. When Allah's punishment and Allah's decision came, nothing could come to the rescue. Nothing could come to the rescue. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأسفوا جندا. Say, whoever is in error, then surely we shall extend for him the most gracious and extension until when they see what they had been promised, immal azab, either the punishment or either the hour, then soon they will know who is in worst position and weakest in their forces. पूछिए जो कोई है गुमराही में, फिर जरूर ढील देगा उसको रहमान मजीद ढील, यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे जिसका उन्हें वायदा किया गया या तो अजाब या फिर क़यामत की घड़ी, रनखरीब वो जान लेंगे कौन थे बेहतरीन मकाम पर और किसका जो है सबसे कमजोर था उनके झत्ते के एतबार से. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ढील देता है, मजीद जो है उनको गुनाह पर गुनाह करने की मोहलत देता है. जब उनका वक्त खत्म हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ में और गिरफ्त में आ जाएंगे. उस वक्त पे मालूम हो जाएगा कि कितने वो कमजोर थे, कितने मोहताज थे, कितने लाचार थे, and how much they were helpless and they could not help themselves. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. And increases Allah for those who seek guidance in guidance. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ, and the everlasting good deeds are the best near your Lord as a reward and the best as a return. और इजाफा करता है अल्लाह उन लोगों के लिए जो हिदायत हासिल करते हैं उनकी हिदायत में, और बाकी रहने वाली नेकियां सबसे बेहतर हैं आपके रब के नजदीक सवाब के एतबार से और बेहतरीन है अंजाम के एतबार से. Those people who seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will open up the doors of guidance for them and increase them more and more in guidance. हिदायत आफ्टर लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद हिदायत से नवाजता है
क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत तलब करते हैं, और अल्लाह की हिदायत कहाँ पे मौजूद है? कुरान में मौजूद है. Where will you find the guidance? You will find the guidance only through the book of Allah, and through no other source you can find guidance. If anybody wishes to seek guidance from any other source other than the Quran, will never get guidance. On the contrary, he will go astray. No matter how excellent may be the author and what excellent may be the content of the book, or whatever be the excellent be the content of the material, the person will never get guidance. Guidance can only be achieved and acquired through the Quran. कुरान से जो हिदायत हासिल हो सकती है, और जो लोग हिदायत के तलबगार हैं, अल्लाह मजीद उनको हिदायत के दरवाजे खोलेगा और हिदायत से उनको नवाजेगा. और सबसे ज्यादा जो है हिदायत का फायदा क्या है? आप नेक अमल करोगे. And what is the outcome of seeking guidance? Is you will do a lot of good deeds. And these are the good deeds, baqiyatus salihat, the everlasting good deeds. These are the good deeds which you did to please Allah. Those are the ones which will come to you in your grave. Those are the ones which will come to your rescue on the day of Qiyamah. ये बाकी रहने वाली नेकियां ही जो है खबर में भी काम आएंगी और महशर के मैदान में भी काम आने वाली है. बाकी सब चीजें इंसान छोड़ देता है. जब मौत लायक हो जाती है तो पहले इंसान का नाम ही मिट जाता है, उसके बाद उसका नाम नहीं लिया जाता. जनाजा कहाँ मदफन करने वाले हैं, मैयत कहाँ पे जो है रखी गई है, ऐसे ही पूछते हैं लोग. आपका नाम ही पहले मिट जाता है. फिर उसके बाद आपके जो सामान थे, जो भी आपके जायदाद थे, जो भी माल था, दौलत था, सब जो है आपसे रुखसत हो जाता. फिर उसके बाद आपके घर वाले भी आपसे रुखसत हो जाते. फिर तने तनहा तुम जो है खबर में कब्रिस्तान में ले जाकर तुमको दफन कर दिया जाता. और वहां काम आने वाली कौन सी चीजें हैं? वल बाक़ियातुस सालिहात. इसको अंडरलाइन कीजिएगा. These are the everlasting good deeds that are going to come to us in our grave and will come to our rescue on the day of Qiyamah. The moment we die, first is our name itself gets disconnected with us. After that, nobody calls us by our name. Then after that, our properties, our wealth, our possessions will all abandon us. And the third, all our relatives, family members will all desert us. And all alone, we are taken to the burial ground and buried. And what will be with us are the baqiyatus salihat. How much are we working to acquire this baqiyatus salihat is a moot question which each of us has to introspect and make an analysis. या हम उसका मुहासिबा करना है कि कितना हम नेकियां करते हैं. 24 घंटे अल्लाह में फ्री ऑफ कॉस्ट देता है. कितना वक्त हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी में और लोगों की खिदमत करने में, बेवाओं मोहताजों की और गरीबों की और यतीमों की पुरसान हाल और उनकी खैरियत पूछने में, उनकी मदद करने में, कितना वक्त जो है हमने दीन की दावत के काम के लिए और फिर लोगों तक जो है दीन को पहुंचाने के लिए, और कितना जो है वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में और याद में गुजारा है कि ये काम आने वाले हैं आखिर चलकर. कितना सदका और खैरात किया है, ये सब चीजें काम आने वाली हैं. हाउ मच डिड यू invest your time in doing a lot of good deeds? 24 hours Allah has given you free of cost. Have you utilized the time to serve the orphans, the destitutes, the have-nots, the poor, the widows? Have you invested some money to give it to the poor? Have you done any work of dawah to convey the message of Islam to the people? Have you invested some time towards studying the book of Allah and in the worship of Allah and the remembrance of Allah? Or have you utilized all the 24 hours only behind this world? The moot question and analysis which each one wants to make. ये तो जो है एक मुहासिबा है जो हम हर एक को करना है. अफरायत अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा अत्तला अल-ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंद अर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नदिसुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा. Have you seen the one who disbelieved in our verses and he said, "La'utayanna malan wa walada." Surely I shall be given wealth and children. Attala al-ghayb. Has he been informed of the unseen, or has he taken near the most gracious ahda, a covenant? Nay, soon we shall record whatever he says, and we shall increase for him of the punishment and increase. And we shall inherit whatever he says, and he will come to us farda, all alone. भला क्या तुमने भला उस शख्स को देखा जिसने कुफर किया या इनकार किया हमारे आयतों का, और उसने कहा जरूर मैं दिया जाऊंगा माल और औलाद. क्या वो मुतला हुआ गैब के बारे में, या उसने ले लिया रहमान के यहाँ कोई वादा? हरगिज नहीं, अनकरीब हम लिख लेंगे जो कुछ वो कहता है, और हम मजीद इजाफा करेंगे उसको अजाब में इजाफा.
और हम वारिस बनेंगे जो कुछ वो कहता है, और वो आएगा हमारे यहाँ अकेला। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, whose father was As bin Wail, a staunch enemy of Islam and the beloved Prophet. On one occasion, this gentleman was owing some money to Khabbab bin Arth radiallahu ta'ala anhu. And when Khabbab bin Arth radiallahu ta'ala anhu demanded his payment, he said, I will give you your payment on one condition, that you will have to renounce Islam and accept our traditional religion and custom. To which Khabbab bin Arth radiallahu ta'ala anhu said, that's definitely not going to happen. Even if I have to die and be resurrected, I will never renounce the religion of Islam. He said, if that is the case, when you die and get up, then at that point of time, I will also be given a lot of wealth and children. At that time, I'll make the payment to you. In other words, he was making mockery of the statement and making fun of the Yawm al-Qiyamah, and he was showing his pride and arrogance, to which Allah subhanahu wa ta'ala sends down these verses, and he says, what nonsensical talk is he making? How is he assuring himself that he will be blessed with wealth and children on the day of Qiyamah, when mental children for such disbelievers will be completely destroyed and cut off from them, and they will be left in the lurch and presented before Allah all alone, and they will be subjected to a severe punishment from Allah. तो ये शख्स जो आस बिन वैल था, ये बड़ा बदतमीज था और इस्लाम दुश्मन था। तो उसने खब्बाब बिन अरत के उस उजरत देने पर यह कहता है कि मैं क़यामत के दिन तेरे को दूंगा तेरा हिसाब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्या इसको जो है क़यामत के दिन किसने इसको भरोसा दिलाया कि इसके पास मालो दौलत गलीबा रहेगा? ऐसे जालिमों को तो जो है मालो दौलत तो इनका जो है हिलाकत का जरिया बनेगा, और वो अकेला आगे आएगा हमारे पास, उस वक्त हम उसका पूरा पूरा हिसाब ले लेंगे। वत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि आलिहतन लियकुन लहुम इज़्ज़ा कल्ला सयकफुरुन बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। And they have taken from besides Allah gods, that they may become for them an honor. Nay, soon they will deny their worship and become against them adversaries or opponents. और उन्होंने बना लिया अल्लाह के अलावा औरों को माबूद, ताकि वो हो जाए उनके लिए बाइस इज्जत। हरगिज नहीं, अनकरीब वो इनकार करेंगे उनकी इबादत को, और वो हो जाएंगे उनके खिलाफ दुश्मन। So these whom they are associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala and worshipping will on the day of Qiyamah become their opponents, become their enemies, because they have resorted to shirk. तो जिन लोगों की जो है ये परस्तिश करते हैं दुनिया में और अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं, ये शुरका उनके जो है क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानी वफ़दा व नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा ला यमलिकुना शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानी अहदा। Follow the translation very carefully. Words are tough, a lot of new words featuring, and the last part of Surah Maryam is very, very powerful. Follow them very carefully. Do not you see that we send the shayateen upon the disbelievers to incite them to commit evil? Ta'uzzuhum izza, to incite them to commit evil. So do not hasten about them, only we are taking account of them and account. The day we shall gather the God-fearing towards the most gracious as a delegation. And we shall drive the criminals ila jahannama virda, towards the hell in a thirsty state. Virda means in a thirsty state. Not they shall have the power to intercede, except who has taken near the most gracious a covenant. क्या नहीं आपने देखा कि हम जो है भेजते हैं शयातीन को काफिरों पर उकसाने के लिए उनको बुरे काम। बस ना तुम जल्दी करना उनके बारे में, सिर्फ हम शुमार कर रहे हैं उनको अपनी गिनती में। जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे परहेजगारों को और वो रहमान की तरफ ले जाए जाएंगे वफद की शक्ल में, और हम हांकेंगे मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासों की तरह। नहीं वो इख्तियार रख सकेंगे सिफारिश का, सिवाय जिसने ले लिया रहमान के यहाँ कोई अहद। So those people who deny the message of Islam or reject the Yawm al-Qiyamah,
On such people, Allah subhanahu wa ta'ala imposes on them the devils who always incite them to keep committing evil over evil, evil over evil. And these people will be brought to the Jahannam in a thirsty state. On the contrary, the God-fearing people will be given a welcome, a dignified welcome, a VIP treatment, and they will all be brought before Allah subhanahu wa ta'ala as a delegation, and Allah subhanahu wa ta'ala will welcome them and admit them into paradise. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. And they said, has taken the most gracious a son. Certainly you have brought a thing most atrocious. Almost the skies yatafattarna minna would have cleft asunder from it. Watanshaqul arz, and would have split the earth. Watakirul jibalu hadda, and would have fallen the mountains in ruins. That they ascribe for the most gracious a son. And not it is suitable or befits the most gracious that he takes a son. और उन्होंने कहा, बना लिया अल्लाह ने किसी को अपना बेटा, यकीनन तुम ले आए हो एक चीज बहुत ही खतरनाक। खरीब था कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए रेजा रेजा होकर, कि उन्होंने मंसूब किया रहमान के लिए बेटा, और नहीं लायक है रहमान के लिए कि वो बनाए किसी को अपना बेटा. So these are blasphemous statements, absolutely atrocious statements, awful statements, full of lies, which the people attribute towards Allah subhanahu wa ta'ala. And you notice Allah subhanahu wa ta'ala mentioning the word Rahman, Rahman, Rahman here in this particular context more often. It's only because of this quality and attribute of Allah being the most gracious that in spite of these people uttering such atrocious and blasphemous statements, Allah has still kept them alive and kept them going. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी है और ये रहमान की सिफत है, जिसके बुनियाद पर और बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे जालिमों के बकवास और बेहुदा बातों पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो है ढील देता है, मोहलत का जो है को मौका देता है. ये इतनी खतरनाक बात है जो उनकी ज़बान से निकलती है कि अल्लाह की सबसे ज्यादा मजबूत जो मखलूक है वो भी सहा नहीं पाएंगे, पा सकते हैं इस किस्म के बकवास. Even the most powerful of Allah subhanahu wa ta'ala's creation will not be able to and unable to tolerate such atrocious statements made by such kind of disbelievers who utter blasphemous statements and say that Allah subhanahu wa ta'ala has taken so and so as a son. These are some of the most powerful creations, the earth, the sky and the mountains, but all of them would have got destroyed on hearing such kind of statements and become intolerable upon them. But it's only the quality and attribute of Rahman that has kept everyone going. But the time will be running out, and after that Allah subhanahu wa ta'ala will hold them seriously accountable and cast them into the hellfire. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda. Not all, whoever in the heavens and the earth, but will come to the most gracious as a slave, abda. Certainly he has encompassed them and counted them as a count, and all of them will come to him on the day of Qiyamah farda, all alone. नहीं सब जो कोई आसमान और जमीन में है मगर आएंगे रहमान के पास एक गुलाम की हैसियत से. यकीनन उसने उन्हें घेर रखा है और शुमार करके रखा है उनको अपनी गिनती में, और सब आएंगे उसके यहाँ क़यामत के दिन अकेले. We are all Allah's slaves. We are Allah's creation. Allah is the creator. We are his creation, and all of us are slaves unto Allah. This is a fact which Allah subhanahu wa ta'ala has repeatedly mentioned every time. And on the day of Qiyamah, whoever you may be, even a prophet of Allah will come to Allah on the day of Qiyamah as a slave of Allah. So no matter what you are in this world, finally you will be presented before Allah all alone as a slave of Allah, and Allah will take account of all your deeds. ये एक हकीकत है. हम कुछ भी हो दुनिया में, कितने भी अमीर हो, कितने भी इख्तिदार रखते हो,
कितना भी माल और दौलत हमारे पास था और कैसे कुछ हमने जो है आसूदा जिंदगी गुजारी, क़यामत के दिन अल्लाह के सुब्हानहू व तआला के सामने एक गुलाम की हैसियत से हमको हाजिर होना पड़ेगा। एंड वी विल ऑल बी प्रेजेंटेड बिफोर अल्लाह ऑल अलोन। ना हमारे माँ होगी, ना बाप होगा, ना भाई होगा, ना बहन होगी, ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, कोई नहीं। Nobody will be there with you. यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह. This fact is known. In Surah Abbas, Allah says very clearly, everybody will be disconnected with you. You will stand before Allah all alone. Your wealth, your status, your position, your family, your relatives, your family members, your own kith and kin. Nobody will be there to come to your rescue. We'll have to stand before Allah and answer Him for all that we did in this world. Just for a second, just think what will be that condition and situation. थोड़ा भी जो हम इस पर जो है गौर करेंगे तो हमारी काया पलट जाएगी और हमारी जिंदगी का जो है perception of life change हो जाएगा. It'll undergo a major transformation. And this is a fact. इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीना व तुनज़िरा बिही क़ौमन लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा. Verily those who believed and did righteous deeds soon will place for them the most gracious love in their hearts. Then only we have made easy in your tongue. We have made it easy. That is the Quran. Then only we have made it easy in your tongue that you may give glad tidings with it to the God-fearing and warn with it to the people who are luddak, quarrelsome or contentious. And how many we have destroyed before them of the generations. Do you perceive of them anyone? Or tasma'u lahum riksa, or do you hear from them even the slightest whisper? बेशक जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल किए नेक, अनकरीब डाल देगा उनके लिए रहमान मोहब्बत एक दूसरों के लिए. तो बेशक हमने आसान बनाया इसको यानी कुरान को आपकी ज़बान में ताकि आप खुशखबरी दे उसके ज़रिए से नेकोकारों को या परहेज़गारों को और डराए उसके ज़रिए से जो झगड़ालू लोग हैं. और कितने हमने हिला किया आपसे पहले कौमों को, क्या तुम महसूस कर सकते हो उनमें से किसी को या सुन सकते हो उनकी कोई आहट. In the authentic hadith of the Prophet also we get to know that those people who strongly believe in Allah and do a lot of righteous deeds to please Allah subhanahu wa ta'ala and dedicated and committed their entire life to the cause of Islam, जो लोग ईमान ले आए और खूब नेकियां करते हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए वक्फ कर दिए, those who dedicated their entire life to the cause of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala starts loving such and such a person. And Allah calls Jibril alayhi salam and says, "Oh Jibril, let me inform you that I love so and so person, and you too love him." Then Jibril alayhi salam starts loving that person. And after that, Jibril alayhi salam, being the chief of the angels, would make this public announcement to all the angels in the sky and say, Allah loves so and so person, I too love so and so person, and therefore you also love so and so person. And all the angels also start loving that person, and that person gains acceptance and gains love from the people in this world. That's an indication that this person is most loved by Allah subhanahu wa ta'ala. तो हमें और हदीस से मालूम होता है कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई बंदे से जो है मोहब्बत करता है तो जिब्रील इस्लाम को बुलाकर कहता है कि जिब्रील फलां शख्स जो इतना नेक है, मेरा पसंदीदा है, मेरी खुशनुदी चाहता है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, तो तुम भी जो है इससे मोहब्बत करो. तो जिब्रील इस्लाम भी जो है उससे मोहब्बत करते हैं और फिर जिब्रील इस्लाम तमाम जो है फरिश्ते जो आसमान में होते हैं उन तमाम को जो है ये बात कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलां शख्स जो दुनिया में है और ज़मीन में है उसको उससे मोहब्बत करता है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम सब भी जो है उससे मोहब्बत करो. और फिर वो शख्स को ज़मीन में इज्जत मिलती है, मकबूलियत मिलती है और लोग भी जो है उससे मोहब्बत करते हैं. इसकी अलामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करता है. So this is in the context of this particular verse of the Quran where Allah says सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत डाल देगा लोगों के दिलों में ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी की खातिर ईमान में पुख्तगी इख्तियार करता है और खूब नेक अमल करता है. Person who loves Allah subhanahu wa ta'ala, the person who has strong iman in Allah, the lot of good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala will create love for such a person in the hearts of others as well. And Allah says, this Quran, O Prophet, we have made it easy in your tongue. You are an unlettered, you have been not exposed to any formal education, but we have made the Quran easy for you.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayana. In Surah Qiyamah, Allah says, you don't get anxious about, don't worry about anything. Everything we will take care. We will help you to recite. We will help you to memorize. We'll all help you to understand, and we'll also help you to explain it. Everything we will take care. Don't worry. So Allah subhanahu wa ta'ala says, oh Prophet, you want through the Quran, in the light of the Quran, warn the people. And this Quran is a book of guidance. It gives glad tidings to those people who are believers, and it warns those people who deny, reject, and argue. Well, it is a warning for them. Allah says, how many generations before who resorted to a contentious method of approach, how Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them. Can you even see any trace of them? They have just been eliminated from the map of the earth. Safe hasti se Allah inko mita diya. Inko hilakat ki gade mein gira diya. इनका कोई वजूद का जरा भी हिस्सा जो है आप नहीं देख पाओगे. तो ऐसे भी कौमों को अल्लाह ने हिलाक किया है. So it's very serious warning. And with this, Allah subhanahu wa ta'ala brings to an end this very powerful surah, Surah Maryam, which we studied about the birth of Yahya al-Islam. We studied the birth of Maryam al-Islam and all that trauma which Maryam al-Islam underwent. And after that, we also studied about how Ibrahim al-Islam did the work of dawah and invited his father towards Islam, but when they did not give in, how Allah subhanahu wa ta'ala then asked him to just move out of the town. Allah bestowed him with Ishaq al-Islam, and then after that with Yaqub al-Islam, all of them Allah made prophet. Then we discussed about so many prophets as well. And towards the end, the blasphemous statements that the people make against Allah subhanahu wa ta'ala is also discussed. May Allah help us to understand the surah in the right perspective. And in the light of the Quran, let us all seek guidance. And Allah himself says, those who wish to seek guidance from the Quran, Allah will increase them in guidance, open up the doors for guidance for them, and everlasting good deeds. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا. That's to be kept in mind. Ameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. May Allah accept Surah Maryam from us. In the process of completing the surah, if we made any mistakes, may Allah pardon and forgive each one of us. Ameen ya Rabbil Alameen. Subhanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.